नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी विद सुधीर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ and this is called Upon Westminster Bridge. This bridge is in the city of London on the Thames River. So in that sense, जब भी हम लंदन की बात करें तो ये एक तरह से उसका सिंबल है, along with the Big Ben or the London Eye. The Westminster Bridge is one of the symbols of लंदन। जैसे आगरा का सिंबल है ताजमहल, यू कुड से इंडिया गेट इज अ सिंबल ऑफ दिल्ली, द गेटवे ऑफ इंडिया इज अ सिंबल फॉर मुंबई। सिमिलरली द वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना काफी जरूरी है, एंड बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ हिज टाइम, राइट? He was honored with the poet laureate title, which meant that he was in the court of Queen Victoria till he died in 1850. 7 साल तक 1843 में I think he was made the poet laureate, right? And he has written lots and lots of poems, right? And Upon Westminster Bridge remains one of his most remarkable poems. काफी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, because इसमें एक ब्रिज के बारे में तारीफ की गई है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, लेकिन साथ साथ एक लार्जर थीम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ अ सिटी, उसकी भी बात इस कविता में हम पाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो बॉक्स में लिखा है इसको आप जरूर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या है। जो पेट्रार्कन सोनेट है, जो सोनेट के बारे में जो राइम स्कीम है, 8 लाइन एक तरह के राइम स्कीम रहता है, बाकी 6 लाइन अलग राइम स्कीम की तरह रहता है, इसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। ओके, सो इट्स अ सोनेट विद 14 लाइन्स, 10 syllables approximately per line, and this is devoted to the city of London, to the Thames River and to the Westminster Bridge. हालांकि आपके बॉक्स में लिखा है कि the world had to still experience the industrial revolution, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरह से शुरू हो गया था, उसके पूरे रिजल्ट्स, परिणाम लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, यूरोप में एक तरह से तब शुरू हो गया था जब ये कविता लिखी गई थी। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। फेयर का मतलब गोरेपन से नहीं है, फेयर का मतलब ब्यूटीफुल है, सुंदरता है। ओके, सो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको कि एक बड़ा प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट माना जाता है। अब जब हम रोमांटिक पोएट की बात करें, हम सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से नेचर को सेलिब्रेट करना, कंट्री साइड मतलब गांव वाले इलाके, उसकी सुंदरता को की प्रशंसा करना, औरतों की ब्यूटी को सेलिब्रेट करना। सो रोमांटिक पोएट्री कैन मीन एवरीथिंग, इट डज नॉट नेसेसरली मीन ओनली लव अफेयर बिटवीन टू पीपल। Okay, and he says that people are not talking only about the industrial revolution. Industrial revolution is very rough because it's about machines, but in this poem he's celebrating the beauty of a city, not talking about the industry or the rough machines. Okay, so ये poem, ये कविता की सेटिंग क्या है? सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, और कवि विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टमिंस्टर ब्रिज की तरफ से गुजर रहा है, और तब वे जो नजारा देखता है उसके बारे में ये कविता लिखी गई है। ओके, ये आप समझ लीजिए। तो फेयर का मतलब, जैसे मैंने कहा पहली लाइन में, इट इज अबाउट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, नॉट ए फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही है। ओके, तो कहते हैं कि क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई नजारा है या नहीं? इज देयर एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट आई एम सीइंग राइट इन फ्रंट of my eyes? Okay, he says, dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां से वेस्टमिंस्टर ब्रिज से गुजरे, ओके, और इस पूरे नजारे की सुंदरता को एक तरह से एक्सपीरियंस ना करे, एक तरह से उसको सराहे नहीं, ओके, उसको उसकी तारीफ ना करे, then that person has to be really dull. डल मतलब बुद्धू, एक तरह से बेवकूफ नहीं बोलेंगे, एक तरह से मंद बुद्धि वाला, उस तरह का व्यक्ति होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी सुंदर नजारे को
बिना अप्रिशिएट करे जा नहीं सकता है, जाना नहीं चाहिए. ओके, so only a person who has no perceptive ability, means that he is not, who is only incapable of appreciating the beauty of something so beautiful, only that person will go without saying anything. Otherwise इससे सुंदर नजारा धरती पर नहीं है. धरती पर इससे सुंदर नजारा, धरती will has does not have anything to show which is more beautiful than this. Okay, which is a little strange because जब हम सुंदरता की बात करते हैं धरती की, हम नदियों की बात करते हैं, हम समुंदर की बात करते हैं, हम पहाड़ों की बात करते हैं, हम जंगलों की बात करते हैं, है ना, लेकिन झरनों की बात करते हैं, लेकिन यहां पर एक शहर की बात की जा रही है, which is a little strange. Okay, and he is saying a sight which is so touching in its majesty. Majesty किसके लिए, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है राजा महाराजाओं के लिए. So he is also kind of celebrating. हालांकि वो जब उन्होंने ये कविता लिखी थी, then he was not the poet laureate at that time, but he wants to kind of say that this is something very royal in its, you know, जिस तरह का एक व्यू है, that is absolutely royal and majestic. Okay. The city now doth का मतलब है does, ये पुराना आर्केक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है. This city now does like a garment मतलब कपड़ा. Okay, where the beauty of the morning, तो उनका कहना है, it's almost like personifying कि ये शहर, लंदन शहर, इस जो सुबह की जो सुंदरता है उसको एक कपड़े की तरह पहना हुआ है. तो एक तरह से ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? मैंने पहले 3 कविताओं में आपको बताया है, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ. तो सिटी को ऑलमोस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि यू नो ही इज वेयरिंग द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक अ गारमेंट. ओके, साइलेंट, बेयर, शिप्स, टावर्स, domes, theaters, and temples lie open unto the fields and to the sky. So what William Wordsworth is saying is that London is wearing the clear, soft light of dawn. Dawn matlab sunrise, like a piece of clothing. Okay, beauty of the morning ko like a piece of clothing. And this is undisturbed. Silent का क्या मतलब है कि किसी भी तरह के ह्यूमन एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से बिल्कुल ही परे है, बिल्कुल भी उससे कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा. इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट, साइलेंट. बेयर मतलब कोई ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी भीड़ भड़ाका नहीं दिख रहा है. Ships, towers, domes, theaters. So what he is saying is that the city's buildings and the different landmarks. Towers तो बिल्डिंग का मतलब है, डोम्स भी बिल्डिंग की होती हैं, थिएटर्स भी एक तरह की बिल्डिंग है, टेम्पल्स भी एक तरह की बिल्डिंग है, और जो जितने शिप्स वगैरह रहते हैं थेम्स रिवर पर, उसके बाद जो समुंदर है वहां पर, they all stretch up outward and upward until they blend into the surrounding fields, the farmlands. तो एक तरह से मर्जर हो जाता है. यहाँ के जितने भी लैंडमार्क्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो सुबह के समय में, सुबह के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में, और शिप्स जो हैं एक तरह से जो बाहर के जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड्स लंदन के आसपास हैं, एंड आसमान जो है उसमें एक तरह से इट इज ऑल मर्जिंग. सो ही इज टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए पोएट, सॉरी लाइक ए पेंटर, लाइक एन आर्टिस्ट. जब आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? अगर आप लंदन का सीनरी बनाए तो they will make some buildings, they will make a ship on the river, right? They'll make the domes, the towers, etc. And then they will make the sky, right? Morning sky means light, orangish sky. So he's talking about it almost like an artist, like a painter. Okay, and he says that the city all bright and glittering in the smokeless air. Smokeless air means अभी कोई भी मशीनें नहीं चल रही हैं, तो पूरा जो वातावरण है उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, स्मोक नहीं है, धुआं नहीं है. तो एक तरह से पूरी तरह से जो सिटी है, इट इज शाइनिंग लाइक ए डायमंड एंड द एयर इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट डज नॉट हैव एनी स्मोक. यहां तक समझ में आ गया? नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन इट्स फर्स्ट स्प्लेंडर. सो यहां पर इससे पहले मैंने
जिक्र किया majesty word का. So majesty is an interesting word used by William Wordsworth because subsequently, as I said, he was honored and made the poet laureate of the UK. And majesty, it conveys majestic and splendid, and is also kind of acknowledging royalty, the British royalty there. Usko ek tarah ka salam kar raha hai. Okay. And London, because at that time was the capital of the biggest colonizer in the world. Britain की colonies पूरी दुनिया में थी उस समय पर जब ये कविता लिखी गई थी. सो एक तरह से उसका एक्नॉलेजमेंट भी किया गया है. तो यहां वो कहते हैं कि अगर सुबह के समय पर अगर आप लंदन शहर के आसपास घूमे तो ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा शहर है ये पूरा साइलेंस का और जो समा है, ब्यूटीफुल सीनरी है, उसका गारमेंट पहनी हुई है. एंड दिस सोनेट इन दैट सेंस इज written in the praise of the urban environment. इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए. This sonnet is written, please write it. This sonnet is written in the praise of the urban environment that we occupy. Okay, it is, it is written with the feeling by William Wordsworth that this is my London. Okay, and he's establishing his connection with the city of London. तो ये दोनों लाइनों का आप इस्तेमाल अपने आंसर्स में जरूर कीजिएगा. ओके, सो ही इज टॉकिंग अबाउट पीस, ही इज टॉकिंग अबाउट बिल्कुल क्वाइट ट्रैंक्विल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. इट्स साइलेंट एंड इट्स आल्सो एम्प्टी. एज आई सेड, बेयर मतलब एम्प्टी. एंड ही इज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग दैट ही इज सीइंग. Smokeless, as I said, there is no pollution, the air is clear, and in the gentle sunlight of the early morning, all the ships and the towers and the domes and the temples and the theaters, they're all glittering. सुबह का yellowish, orangish, reddish light उन सभी buildings के ऊपर गिर रही है. Then, never did sun more beautifully steep. उनका कहना है कि जो rising sun है, it shines upon this city of London. Okay, and it is not possible that the sun could have got a better environment or a stage for it to shine in all its glory. इससे better stage सूरज के लिए नहीं मिलता ताकि वे अपने पूरे स्प्लेंडर को पूरी तरह से दिखा सके, कि वे पूरी जो बिल्डिंग्स हैं, पूरा जो एनवायरनमेंट है, उसको इल्यूमिनेट करे, उसको ग्लिटरिंग करे. तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म, इससे बेटर स्टेज इवन सूरज को नहीं मिलेगा. तो इट्स ऑलमोस्ट ही इज मेकिंग ए कनेक्शन बिटवीन द सन एंड द सिटी ऑफ लंडन ऑल्सो, दैट फॉर द सन ऑल्सो इट्स एन ऑनर टू बी शाइनिंग ऑन द सिटी ऑफ लंडन. ओके, सो ही इज सेइंग दैट आई हैव नेवर फेल्ट so calm, so deep, so happy, and so peaceful, and so calm. Okay, so he's saying never did sun more beautifully steep in its first splendor, valley, rock, or hill. Anywhere, valley ho, rocks ho, hill ho. Okay, but this is the most beautiful kind of an shine that it is bestowing on the city of London. It never shone on any feature. So he's making comparisons with natural landscape. Natural landscape कौन से हुए? Valley हुए, rocks हुए, या कोई पहाड़ हुए. लेकिन उससे भी ज्यादा it is shining on the city of London. So he's elevating the stature of the city as compared to the natural scenery that you will find anywhere in the world. And he's saying it is pure, and the river Thames, the river glideth at his own sweet will. Glideth again डॉट की तरह archaic word है. Archaic मतलब पुरानी इंग्लिश वाला वर्ड है. Glideth मतलब glides, moves very smoothly. Okay, English आजकल की modern English में we would have written glides, G-L-I-D-E-S. Okay, तो glideth का मतलब है move smoothly along, and he's saying that the river Thames moves slowly, flows easily. It is guided by the forces of nature at its own sweet will. Okay, dear God, the very houses seem asleep, right? So the whole city is like a powerful object, but right now it is inactive because it is sleeping. And his dear God, it's almost like, he's kind of communicating to God also that, it is all so beautiful and all this is a creation of God in that sense. But God and the city of London is man-made. God has not created the city of London. God has created sun and the valleys and the hills. But he's saying that, he's making a connection between man-made beauty and the natural beauty, and therefore he's communicating directly to God.
the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still. Mighty heart is a metaphor. It's a word, it's a phrase which has been used to convey the city of London. Okay, the city is in the midst of the Industrial Revolution and the word mighty carries a lot of weight. But right now, early morning, it is lying still. कोई शोर नहीं है. It's absolutely quiet. So the rhyme scheme है जिसका कि मैंने जिक्र किया. A, B, B, A, पहली 4 लाइनें. A, B, B, A, next 4 lines. But last 6 lines का C, D, C, D, C, D. That's the rhyme scheme. Poetic device, metaphor जैसे mighty heart for London. Personification, earth का, to show that earth, to show also that whole thing of, the city is wearing the silence like the beauty of the morning like a garment. These are all personification, almost like a human being की तरह city और earth को convey किया गया है. 3-4 एनालिसिस पॉइंट्स में जल्दी से बता देता हूं. तो लंदन शहर को एक नेचर का, वातावरण का एक्सटेंशन के रूप में इसको बताया गया है. एंड पोएट इज कंपेयरिंग द सिटी टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ओके, दैट सराउंड्स द सिटी. एंड ही इज गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि कोई भी दूसरा शहर नहीं है जो कि सुंदरता में लंदन का मुकाबला कर सके. देयर इज नो सिटी दैट इज कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी to the city of London. So he's saying it rather emphatically, rather bluntly, without kind of mincing words. Dusra significance of the title, Upon Westminster Bridge. So the image of the bridge, okay, which is a symbol of the bond between the human and the natural world. Okay, it's a man-made structure over a natural feature. Thames River तो natural feature है. उस natural feature पे Westminster Bridge is a man-made structure. So in that sense, it is kind of making it into a bridge. So he's saying that bridge क्या करता है? Bridge basically it puts a distance between the water and the people so that the people can cross the river, right, without having to swim across the Thames River, right? So it is kind of creating a gap between the river and the people. At the same time, the bridge also creates a space, a platform, a stage for people to stand there and appreciate the beauty of the Thames River, okay, from a new angle, right? So the bridge allows people to overcome a natural barrier. ये तो पहला point हो गया. दूसरा, to appreciate it and immerse themselves in the beauty of the Thames River and everything that surrounds that particular place. So in that sense, Westminster Bridge becomes a bridge between two worlds, the natural world and the beauty of the entire place, which is the city of London, which is man-made, right? Third point, the reference to earth and then to say that the site is majestic conveys that the poet feels that the city of London is actually more beautiful than any other feature on earth. ये तो मैं आपको बता दिया. Now usually जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम, जैसे मैंने कहा, पहाड़ों की, जंगलों वगैरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही showing of the beauty of the city, right? Almost as if कि London is the child of earth, because parents show off, ओ मेरा बेटा बहुत बढ़िया कविता बोलता है, बहुत बढ़िया गाना गाता है, बढ़िया डांस करता है, ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है. Parents show off their sons, their daughters, right? Here, what is the word he has used? Earth has not anything to show more fair. So Earth को एक तरह से लंदन के पेरेंट की तरह से एक तरह से कन्वे किया गया है because of that word show that he is trying to convey, show, ये personification का इस्तेमाल किया गया है, and he is also trying to convey that Earth is almost like a parent of the city of London. At the same time, the poet is establishing a connection between the man-made structures in London, the ships, the towers, the domes, the temples, with the fields and the sky, which represent nature. Okay, I hope ये कविता आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, and you will be able to deal with any questions that come from this particular poem. Okay, thank you very much for watching.